Hi, so welcome back to our current affairs series. We are trying to learn about various topics which are important for UPSC preparation. So if you are very new to this, तो आप subscribe कर लीजिए. We are going to have regular lectures with respect to this. All right. So let us see the explained section of Indian Express. अगर हम देखें आज 4 आर्टिकल्स आए हैं जो इनमें से 2 आर्टिकल ज़्यादा रेलिवेंट है, बाकी 2 है कि भाई हम थोड़ा सा फैक्ट्स उसको चेक कर सकते हैं. So let us see. So with respect to fact check है ना, जो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. So recently government of India it came up with this fact check unit, and this is in fact our first topic. This fact check unit has come and which has been stayed by the Supreme Court. So let us try to understand what the controversy is all about. क्यों ऐसा हुआ है, कौन सी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के अंदर ये लॉज लेके ये रूल्स इनफैक्ट ड्राफ्ट किए गए हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. अब ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. So please read with me articles. We are trying to empower you कि आप read करना सीख जाओ अच्छे से, है ना. So let us see number 1. So Supreme Court stayed the operation of these IT rules which empowered the government to identify fake news. क्या आप identify government का क्या कहना था कि भाई we are creating a fact check unit. What this fact check unit is going to do is going to identify the fake news and eventually tell it to the social media platform and they have to take it off, है ना, कि भाई ऐसी चीजें आप नहीं चला सकते. Eventually, on March 20, this fact check unit, this was notified as a statutory body. So please remember this from prelims point of view. Under whom? Under PIB, with the power to flag what it believes is false information related to central government and its agencies on social media sites. So ये इसका पूरा overall logic था. The amendment to these IT rules 2021, they allowed the ministry to appoint FCU as per the notified rules of April last year. And on Jan 31 this year, 2-bench of Bombay High Court, they gave a split verdict. Okay, split verdict दिया. And as a result of that, eventually confusion हुआ, तो third judge को भी लेके आया गया कि भाई you can help them out. Okay, so the third judge who was assigned to give an opinion on the split verdict is yet to give his final decision. But when he was asked to see कि भाई इसको set aside करना है या इसको stay करना है, so 2-1 majority they said that we are not going to stay, but still Supreme Court ने इसको फिर stay कर दिया है. Let us see why. So let us first see the amended rules. कि rules थे क्या? So these amendment to the information technology rules 2021, they were notified in April 2023. They brought in a legal framework, है ना, एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की कैसे हम फैक्ट चेक होना चाहिए, किस तरीके से इनफैक्ट फेक न्यूज को हमें एनसर्कल करना है. सो द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम एंड मोर इम्पोर्टेंटली introduce a legal mechanism for government to fact check online content pertaining to government business. गवर्नमेंट से कोई भी न्यूज़ होगी उसको गवर्नमेंट अपना बता सकती है. इनफैक्ट इसमें बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं. पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वही गवर्नमेंट के चीज़ों को फैक्ट्स को रॉन्ग बता देती है. तो ये बहुत बड़ा मैनेज है ना. The rules made it obligatory for intermediaries कि ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, to not publish, share or host fake, false or misleading information of any business of the central government. The changes raised concern that FCU would take the government into sole arbitrator of truth. ये कीवर्ड आप याद रखेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी ऐसे टॉपिक्स न्यूज में आते जरूरी नहीं इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली आप यहाँ से उठा सकते हो. That how the government was trying to become the sole arbiter of the truth as per the fact check rules. The rules and therefore were challenged in the Bombay High Court. So what were the question in front of High Court? The question actually वहाँ पहुँचा इसलिए because petitioners like Kunal Kamra, who is a famous comedian, Association of Indian Magazine, Editors Guild of India, even news channel TV18, ये सब वहाँ पहुँचे and they challenged this rule 31BV of IT rules. Mind it कि IT rules के ऊपर UPSC पहले भी मेंस पे क्वेश्चन पूछ चुका है 2013 के अंदर 66A सेक्शन के ऊपर. इस पे ऊपर दोबारा क्वेश्चन आना भी ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि दोबारा आ जाए. As being violative of Article 14, 19(1)A and G and Article 21 of Constitution and Section 79, okay, of the IT Act 2000. And जो amendment किया गया था इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो they expanded the general term fake news to include fake news involving government business. तो एक wider term दे दिए. जब भी हम wider term देते हैं ना तो उसका एक बड़ा problem होता है, how उसको define कौन करेगा. This provision when enacted in 2021 refer to any information which is patently false or misleading in nature but may reasonably be perceived as a fact. अब इसको amend करके इन्होंने क्या किया, any business उसको किया. And second they said that for that purpose government can come up with a fact check unit. तो इन्होंने इसको थोड़ा सा change कर दिया है. All right. And then the petitioner argued that this is going to have a chilling effect. So this is the second keyword.
ना, फर्स्ट कीवर्ड हमने कहा था सोल आर्बिट्रेटर ऑफ ट्रुथ, एंड सेकंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अंडर द रूल्स द सेंटर वुड आस्क इंटरमीडियरी एंड नॉट इंडिविजुअल. तो बहुत इजी नहीं हो जाएगा कि सीधा ट्विटर को बोला, ट्विटर को और जो भी एक्स प्लेटफॉर्म बन गया है उनके लिए तो इजी है. दे वांट टू ऑलवेज मेक श्योर उनका बिजनेस हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए. उनको फर्क नहीं पड़ता थोड़ा बहुत किसी का अकाउंट ब्लॉक करना पड़े, सस्पेंड करना पड़े, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But they can easily take it down if it is found misleading. However, the restraint on the intermediaries would indirectly affect the individuals. Section 2(1)(w) of the ITEC defines an intermediary as any person who on behalf of another person perceives, stores, transmit. तो इसका बहुत बड़ा इन्होंने डेफिनेशन दिया है. रिकॉर्ड इंक्लूड्स, इसमें सब कुछ आ जाता है जो भी आपके साइबर स्पेस के अंदर आता है, हर कोई इसका पार्ट बन जाता है. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर लाइक जियो हो गया, एयरटेल हो गया, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजन, ऑनलाइन ऑप्शन साइट, पेमेंट साइट, सब कुछ साइबर कैफे तक भी इसके अंदर पार्ट बना दिया गया है. एंड होना भी चाहिए एक्चुअली. जब लॉ बनाते हैं तो ब्रॉडर होना चाहिए. द ब्रॉड डेफिनेशन वुड इंक्लूड एवरीबॉडी, बिग टेक, मीडिया साइट, इंटरनेट सर्विस, सब कुछ है. एंड सेक्शन 69 ऑफ दिस एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू ब्लॉक public access to any information through any computer resource. The rules were framed essentially in exercise of this power. तो इसको गवर्नमेंट ने यूटिलाइज किया टू come up with the draft rules. However, no rule-making powers can be exercised by Parliament, which is against the Part 3 of the Constitution, which is the fundamental right. And when these जब कंप्लेन आया था तो बॉम्बे हाई कोर्ट को इसके ऊपर डिसीजन लेना था. तो दो अपने हाई कोर्ट के जस्टिस थे. G.S. Patel stuck down the amended rules by saying that eventually that the state cannot coarsely classify speech as true or false and compel the non-publication of the latter. This is nothing but censorship. However, this was eventually countered by Justice Neela Gokhale, who said that the right of citizens to participate in representative and participative democracy of the country is meaningless unless they have authentic information. तो उन्होंने उसको ओके कर दिया. Because of split verdict, the third judge, Justice Atul S. Chandurkar, he was also assigned. Okay, so eventually he refused to grant any interim stay on the amended rule. An appeal was filed before Supreme Court against the rejection of interim stay. However, a day before Supreme Court was to hear, all right, the center also notified 2023 rules in the official gazette. With Lok Sabha election less than 1 month away, the rules were crucial for government engagement with news about government business. Stay लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया क्यों? देखो स्टे इसलिए लगाया गया है बिकॉज जो जब भी हम किसी एक बेंच की वर्डिक्ट देते हैं तो अगर एक माइनॉरिटी वर्डिक्ट बहुत ज़्यादा हार्श है ना, बहुत ज़्यादा हार्श है टुवर्ड्स दिस थिंग. जैसे इस केस में अगर हम देखें, so it is from the Justice Patel. Justice Patel is saying that it is completely going to have an impact on the freedom of speech and expression. ये censorship के बराबर. That's why Supreme Court has eventually stated. नहीं तो normally क्या होता है, आप देखिए आर्टिकल में, Supreme Court does not stay a law before ensuring that or before coming out with the verdict that it is unconstitutional. जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस में हुआ, लेकिन इस केस में अभी तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी स्टे लगाया गया है. उसका दो मेजर रीजन है, वो आप प्लीज अच्छे से समझ लीजिए. वन, जो रूल्स बनाए गए हैं दे आर मेड बाय मिनिस्ट्री इन एक्सरसाइज ऑफ पावर डेलीगेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पार्लियामेंट. तो एक ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था, फ्रेमवर्क वाज मेड बाय पार्लियामेंट, रूल्स आर बीइंग मेड बाय द मिनिस्ट्री. दिस इज द रीजन व्हाई the rules are not a direct expression of the will of parliament. This is number one. And number two, the Supreme Court has in the past stated that an interim stay can be gotten only an explicit finding of unconstitutionality. And Justice Patel, उनकी जो 148 पेज की verdict है, it has explicit finding of unconstitutionality. और ये पहले भी हो चुका है, like in the case of महाराष्ट्र रिजर्वेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मराठास, इवन द फार्म लॉस. सो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे ये इसको स्टे किया है विदाउट इवन कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल सो फार. मतलब ओरल वर्डिक्ट नहीं है, बट एक स्प्लिट वर्डिक्ट है अभी तक, जिसका भी फाइनल डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट लेगा. आफ्टर दैट वी विल सी हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू डेवलप. सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. ओके, सेकंड जो हमारा टॉपिक है, दिस टॉपिक इज with respect to universe, right? So if we see our solar system, we have one star sun and then we have 8 planets. Pluto जो है उसको dwarf planet बोलते हैं, और as per the International Astronomical Union उसको पहले planet बाद में dwarf planet की कैटेगरी में डाल दिया गया था. Now what they are saying that the planetary system that includes Earth and its sibling planets orbiting the sun has been remarkably stable. है ना, हमारा बहुत stable है, right? But not all planetary systems are so lucky as per new study involving twin stars, कि जहाँ पर भी दो stars हमें साथ में मिले हैं. An examination of 91 pairs of stars with matching size and chemical composition
show that a surprising number exhibited signs of having ingested a planet. तो किसी और planet, जब पूरा planetary system बन रहा होता है तो बहुत सारे forces of nature जो है they come into play. So it may be so many of the material which are going to create a planet, they could be easily engulfed by the star, right? तो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं. What are twin stars? तो स्टडी ने उसके बारे में बताया है. In the general nature they talked about they looked at the stars that formed within the same interstellar cloud of the gas and dust called co-natal star, giving them the same chemical makeup, roughly equal mass, and these are called twins. है ना कि भाई एक साथ ही पैदा होना. While the pair are moving together in the same direction within the our Milky Way galaxy, they are not binary system of two stars gravitationally bound to each other. तो gravitationally bound नहीं है, वो एक साथ ही पैदा हुए, इसलिए उनको twin star बोलते हैं. एंड देयर केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है व्हेनेवर दे एनगल्फ अ प्लैनेट, है ना. बिकॉज उनका तो जो केमिकल मिक्स है, जैसे कि दोज हु एनगल्फ दे विल हैव हायर अमाउंट्स ऑफ आयरन, निकेल एंड टाइटेनियम. इसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं. ऑलराइट, एज सच यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, बट एक फैक्ट आप याद कर लीजिए कि जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम्स है दे आर नॉट स्टेबल इन नेचर. ऑर्बिट, और जिसका भी ऑर्बिट चेंज हो जाता है उसमें ऐसे केसेस आ जाते हैं. जैसे कि व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? दैट ऑर्बिटल डिस्टर्बेंस हुआ होगा, नंबर वन. एंड सेकंड, इफ अनदर स्टार पासिंग अनकंफर्टेबली क्लोज, तो हो सकता है वो किसी और प्लेनेट को एनगल्फ कर ले जो उसके सोलर सिस्टम में. जैसे कि आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट हाउ वी सी द बिगिनिंग ऑफ द मून इटसेल्फ. सो अ planet which was very close to the size of the earth eventually went very close by, and as a result of this collision the mass which came out, it started accretion and eventually it took the shape of moon. तो वही प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जब भी कोई पास से जाता है तो ये होने के चांसेस हैं. एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम लाइक द सोलर सिस्टम इज नॉट अ गिवन, है ना. ये सबसे मोस्ट की टेक अवे है इस पूरे आर्टिकल का कि भाई स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं है हर जगह. The researcher said that it was likely that their observation signaled whole planets being ingested, and उन्होंने एक डेटा भी दिया. Around 8% of these pairs had one star at least devouring a planet. तो ये हमें बस याद करना है उस हिसाब से, राइट. उतना ही इस एग्जाम के लिए काम का, और ज़्यादा अंदर घुसने का जरूरत नहीं है. Then one data has come with respect to aspects of inequality in India. अब ये आर्टिकल ओकेश है, फैक्ट स्पेसिफिक है, एंड आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा, बस इसको आप यूज़ कर सकते हो पेपर 3 के अंदर जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं. Let us try to understand. This is, सबसे पहले इसके रिसर्च का नाम क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिसर्च. सो दिस इज द इवेंचुअल प्रोजेक्ट, है ना. एक वर्किंग पेपर है जो आया है. दिस टॉक्स अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया. तो इसके बारे में जान लेते हैं. WIL, it's a Paris-based global research center focused on study of inequality and public policies that promote social, economic and environmental justice. ठीक है, उसके बारे में ये बात करती है. Then सेकेंड, इट हैज़ गिवन दिस रिपोर्ट, है ना. अगर आप ग्राफ एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट इनइक्वालिटी इन इंडिया इवेंचुअली पहले रिड्यूस हुई टिल द अर्ली 1980s, लगभग 1982 में उसका बॉटम आउट हुआ, एंड फिर उसके बाद से वो इंक्रीज होना शुरू हुई और राइट नाउ इट इज एट इट्स हाईएस्ट. ऑलराइट, ब्रिटिश राज में भी इनइक्वालिटी ज़्यादा थी, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस थोड़ा सा कम हुई और 80s के बाद से ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, राइट. सो लेट अस सी. A new working paper by World Inequality Lab, which is an international collaboration between researchers, has said that inequality in India declined post-independence till early 1980s, after which it began rising and skyrocketed since the early 2000s. और वो increase हो गई है ना, लगभग हम इस पे देख भी सकते हैं डेटा के हिसाब से. And this specific research, it is known as the paper Income and Wealth Inequality in India, the Rise of Billionaire, है ना. ये बहुत ही फेमस टर्म है, फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनियर राज. आज की डेट में बिलियनियर बहुत बढ़ गए हैं. एंड दे हैव यूज डेटा फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंट्स, वेल्थ एग्रीगेट, टैक्स टेबुलेशन, सब कुछ यूज़ किया है. उन्होंने फिर बहुत सारे ट्रेंड्स बताया हमें कि जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें एवरेज इनकम की, ठीक है, तो इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1960 टू 2022 2.6% से इंक्रीज हुआ है अगर हम रियल टर्म्स में बात करें आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन. अगर पहले 30 साल की बात करें 1960 टू 1990, तो ड्यूरिंग दैट टाइम रियल ग्रोथ सिर्फ 1.6% था. 1990 से 2022 में 3.6%. सबसे ज़्यादा जो तेज हुआ है वो 2010 से 2015 के बीच में, इन विच वी वर हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, वो 4.9% पर ईयर रिस्पेक्टिवली था. नंबर ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो बिलियनियर्स हैं, दे वर ओनली 1 in 1991. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर. और आज की डेट में क्या हो गया, 50 के आसपास है 2010 में, और अब 150 से ज़्यादा हो चुके थे, 162 के आसपास है. नंबर ऑफ टैक्स पेयर वर हार्डली 1% in 1990, they were increased to around 9% this time. एक्सट्रीम लेवल ऑफ इनइक्वालिटी देखो वो इंक्रीज हो चुके हैं. द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम दैट वेंट टू
टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन वाज 22.6%, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, द मोस्ट सिंस 1922. सो इन लास्ट 100 ईयर्स इनकम इनइक्वालिटी इज एट इट्स हाईएस्ट. ये डेटा आप याद रखेंगे, दिस कैन बी रिमेंबर्ड फॉर योर मेंस. ओके, प्रीलिम्स में तो मुश्किल है, ट्रेंड में आ सकता है क्वेश्चन, तो पूछ भी सकते हैं. अगर हम ग्लोबली बात करें, पेपर कंपेयर्स इंडियाज इनकम इनइक्वालिटी. सो एज ऑफ अगर हम कंट्रीज का डेटा लेते हैं, इंडिया इज ओनली सेकंड टू साउथ अफ्रीका, वो आपको इससे पता भी चल जाता है. और अगर हम वेल्थ को भी ले लें, वेल्थ इंक्लूड्स द इनकम ऑफ नॉट ओनली द करंट ईयर बट जनरेशनल वेल्थ भी आती है, उसमें हम फोर्थ हैं. वी आर बिहाइंड साउथ अफ्रीका, ब्राजील, यूएसए एंड इंडिया. और सिर्फ इनकम की बात करें तो हम सेकंड नंबर पे हैं. अब मेन चीज़ मेरे को जिसमें लगता है पॉलिसी सॉल्यूशन, जो हम सबको वैसे भी पता है, तो उसमें क्या चाहिए, सुपर टैक्स चाहिए हमें ऑन बिलियनियर्स एंड मल्टी मिलियनियर्स. एंड दिस टैक्सेशन इवेंचुअली कैन हेल्प अस इन फाइनेंसिंग द इम्पोर्टेंट investment areas like education, health and public infrastructure to address the rising inequality, but which in itself is a difficult thing, right? वो इतना आसान होता नहीं है. Now the last topic, this is with respect to Balochistan. So जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, you need to understand it is one of the important province of Pakistan. It includes around 44% of the geographical area of Pakistan. Now why this has been in news? Because वहाँ पे separatist activities हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है ना. जब भी हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, we only focus on Kashmir, but this is the part of Pakistan which eventually is always in this kind of a problem. So let us see what is the problem here. So problem यहाँ पे ये है कि the Majid Brigade, it is one of the separatist group. Baloch Liberation Army has claimed responsibility for an attack on strategic Gwadar port. तो ग्वादर पोर्ट जो है वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है फॉर पाकिस्तान, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू टेक अवे द बिजनेस फ्रॉम द चाहबार पोर्ट. चाहबार पोर्ट में इंडिया ने ईरान के साथ में अच्छा एक पैक्ट वगैरह साइन किए थे विद रिस्पेक्ट टू बिजनेसेस, राइट, व्हिच कैन हेल्प अस. इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अस द वे ऑल द वे अप टू सेंट्रल एशिया. तो अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप IR वगैरह पढ़ते हैं अच्छे से, तो धीरे धीरे भी हम भी आगे आपको अच्छी सीरीज में समझाएंगे और IR के स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाएंगे. तो ग्वादर पोर्ट जो है, दिस हैज वेंट टू चाइना, बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ड बाय चाइना इन दिस रीजन, एंड ग्वादर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस ग्वादर पोर्ट, दिस कम्स इन दिस बलूचिस्तान रीजन, एंड दीज पीपल आर नॉट हैप्पी विद द वे द पाकिस्तान स्टेट इज ट्रीटिंग देम. सो लेट्स सी. तो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि 8 militants have been killed while 2 security personnel have caught in the attack. BLA said no, only 25 security personnel have got killed. Now, irrespective of the data, this BLA is the most prominent separatist group in rest of Balochistan. The Majid Brigade, which has been active since 2011, is the BLA's dedicated suicide squad. The unit is named after two brothers, है ना, जिनका नाम मजीद है, लगभग एक का नाम सीनियर है, दूसरे का नाम जूनियर है. जैसे उसके बारे में बात करते हैं. तो थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस की एक हल्की सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. बलूचिस्तान इज इन पाकिस्तान साउथ वेस्ट, इज द कंट्री लार्जेस्ट, है ना, एज आई हैव टोल्ड यू, 44% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ पाकिस्तान, एंड मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड प्रोविंस भी है. ऑयल रिजर्व्स है यहाँ, नेचुरल रिसोर्सेज है. तो रिसोर्स कर्स एक टर्म होती है कि जहाँ भी रिसोर्स ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ इवेंचुअली डेवलपमेंट होना मुश्किल हो जाता है. जैसे इंडिया के केस में झारखंड वगैरह वाला रीजन हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया. बट द एथनिक बलोच, दे आर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट अंडर रिप्रेजेंटेड पीपल. एट अ टाइम ऑफ पार्टीशन दे हैड मल्टीपल chieftain, दे वर ट्राइंग टू रिमेन इंडिपेंडेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बड़े थे अहमद यार खान. He was trying to secure an independent state. However, he was forced to exit in 1948 after Pakistan invaded Kalat. Kalat was the area where he was ruling. This triggered insurgency, and eventually this has been fueled by economic dissatisfaction, okay, political disenfranchisement, right to vote नहीं दिया इन लोगों को, and finally repression by the Pakistani state. And right now, since the China has come up with this China-Pakistan economic corridor, Gwadar is a very important part of that, right? So despite rampant unemployment in the province, engineer and technical specialists were hired from. तो वहाँ पे जो भी employment देखो इस प्रोजेक्ट में जा रही हो, पंजाब, सिंध या इवन चाइना से जा रही है, बलूचिस्तान से नहीं जा रही है. एंड रिसेंट ईयर्स दैट्स वाई दे आर टारगेटिंग दिस, बिकॉज चाइनीज नेशनल्स को भी टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज को भी टारगेट, बिकॉज दे आर गिविंग सिक्योरिटी टू देम. एंड ये जो पूरी कहानी है ऑफ दिस फैक्शन, है ना, ये बहुत पुरानी है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो माजिद सीनियर, उनकी कहानी क्या है कि इन मई 1972 नेशनल अवामी पार्टी, दिस वाज वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इट केम टू पावर इन बलूचिस्तान, एंड nationally it sat in opposition to Zulfikar Ali Bhutto, who was having the PPP. This had long advocated for regional autonomy, and it was even emboldened by the liberation of Bangladesh by India in 1971, है ना, वहाँ पे because of the manner in which the Bangladeshis, they were treated by the Western Pakistan. Urdu versus Bangla का issue था उस टाइम पे. I hope all of you know about it.
It was a major war which was won by India. But Bhutto, after this humiliation, eventually said no about any kind of concession. And from the beginning of NAP's terms, okay, Bhutto attempted to undermine its working and eventually इसको dismiss कर दिया गया in Feb 1973, which led to insurgency and the whole area. He became very, very problematic from 73 to 77. In this context, Majid Langev Sr., he was a young Baloch leader. He tried to assassinate Bhutto in 1974. He was standing on the top of a tree and eventually had a grenade in hand and he had no plans of escape. So this was more of a suicide he was going to do in order to kill Bhutto. So this led to the beginning of this whole stance. Then after this, after the Majid Senior, eventually we see the birth of his younger brother Majid Langev Jr., who was born 2 years after the senior was killed. In 2010, he was along with his other militant friends in Quetta. And thereafter, when the security forces from Pakistan came, he tried to just stop them. And for an hour's resistance, he gave up his life and was able to save his comrades. That's why these two people, these two brothers, eventually they have now a mythical status in Balochistan. Even though it is concerning for India, because terrorism in any form has been something which is against the international ethos, which is against the policies which are pursued by India. But if we see Pakistan, this is also because of the policies that they are pursuing, right? So you have to also see that. So when Aslam Achu, he was one of the BLA leaders, decided to establish a suicide squad, the name Majid was chosen for it. And this carried out its first attack in 2011. And now, after a long hiatus, 5-6 साल का 2018 से, they have become very active in last few years. Just see, Chinese consulate has been attacked, Gwadar Pearl Continental Hotel, as well as Pakistan Stock Exchange in Karachi has also been attacked by this group. So this is something which is concerning for Pakistan as a nation. At the same time, it is also concerning for us, because if terrorism is going to be or even the separatist activity is going to be very prominent in our neighborhood, so Pakistan agar destabilize hoga, this is something which is not something which is going to be a happy moment for us, because if this threat is going to go down, it's also going to increase our security threats. That's why we need to be aware about it, and India's foreign policy should be aware about these specific challenges. Okay, so these were the articles for today. I hope all of you learned some new things about it. We'll carry on this series. Let's hope you're able to learn on time and we can eventually clear the civil services examination with our good efforts. Thank you so much. All the very best.